Strangers rank their intelligence. सब लोग अपना अपना जिसको लगता है क्या ओके गिगो नेक्स्ट ये देखेंगे ठीक है. जिसको भी अपना इंटेलिजेंस तुम लगता है तुम्हारा IQ क्या है लिख दो कमेंट्स में लिखो whatever IQ you think in your mind you have. Hey everyone, thanks for tuning into another episode of Ranking. Before we get into this is my first episode, it's not in another episode. So I want to give a big shout out to our sponsor Grammarly. Grammarly? Okay. Okay. Grammarly helps me okay. makes clarity suggestions okay. for writing. Okay. .com/Jubilee to okay. .com/Jubilee. Okay. I wasn't planning to go to college. That wasn't like a goal of mine. My parents were like, well, you should apply to at least one college. And I was like, we'll never get in here. And then I went to Yale. She went to Yale because she's so smart. She was like, मेरा तो किसी कॉलेज में नहीं होगा ये वाली लड़की जो क्लास में होती है ना कैसा गया यार तुम्हारा पेपर बढ़िया नहीं गया यार didn't go well यार मैंने जैसे प्लान किया था 100% में पूरा 100% नेल करना वो नहीं हो पाया 0.5% से 0.5 से चीज़ें ख़राब हो गई तो मेरी नज़र में तो चीज़ें नहीं हुई हैं सो जब मेरे मार्क्स आएंगे रिटर्न यू नो व्हेनेवर द मार्क्स बेसिकली रिवील होते हैं तब आई विल जस्ट अर्न 99.5 so it wasn't good यार. Then you had them complete an IQ test. अपना IQ लिखो यार तुम लोग भी यार IQ नहीं लिख रहे हो सब लोग अपना IQ लिखो पहले Intros. Yeah. बिना टेस्ट लिए तुम लोग को जो लगता है तुम्हारी IQ है वो लिखो. I'm Shwetabh. I'm 24. I work in finance. I have a bachelor's degree. I went to Yale. I'm Tyler. I'm 21. I'm a high school graduate and I work in the Marine Corps. I'm Kaylee. I'm 25. I'm a software developer. I went to Ohio University and I have a bachelor's degree. Every Indian at the age of 13 is a software developer. Maria, I'm 30 years old. I have my PhD in cancer biology. That is not a thing. And I work in a biotech industry. Grad school, I went to University of South Carolina and no such thing exists as cancer biology. Undergrad, I went to University of Florida. Hi everybody. My name is Sean. I'm 27. Fashion designer? I'm the director of social media for a company and I also work for a digital ad agency. Okay. I got a double major in dance and cultural anthropology? Wow. Cultural anthropology. Undergrad, I went to Loyola Marymount University. Hi everybody, I'm Ray. I'm 24. Wow, we have यहाँ पे 4000 IQ वाले लोग देख रहे हैं मेरे साथ. Amazing. तुम लोग फिर इस वीडियो में जितनी भी चीजें छुपी हुई हैं एक सेकंड में you'd be able to catch. Graduated with a so I'm very happy कि मैं ये वीडियो तुम लोगों के साथ देख रहा हूँ. in Harvard recently and I work in consulting. Oh, y'all are babies. I know, that's what I was saying is age of actor. Yeah, it gives you like years of experience. Yeah, well, I guess we need maybe it's good to identify what intelligence means to everybody. I think intelligence is better defined as your adaptability and your problem solving skills more than it is your education. Obviously like the education, the stuff you've been through puts a lot into play in it because it gives you more resources, more thoughts to draw from. The formal education definitely helps, but I don't think it's in any way essential. So what is the most essential? So the most essential thing would probably be common sense. Yeah, so for me personally, so critical thinking. I think intelligence is both EQ, IQ, and that common sense, street smart intelligence, all of that combined. EQ, IQ, or people consciously or unconsciously, when they see someone, form an opinion immediately. Like I'm sure we all did right away. When I saw you, I told myself, Maria, do not judge him just by his looks. He could be throwing you off, or that's just who he is, but he can talk the talk and walk the walk. Sean, I didn't want to judge him based on the way he looks or dresses or acts, so I was like, I think he's intelligent. First impression. I think he's intelligent क्योंकि कोई ऐसे अगर the way he talks and looks, it's a high possibility कि वो हो सकता है intelligent ना हो. I don't know. Impressions, I would put him at the bottom only because when I was in school, all the other people with like the bright neon colors and stuff, they were typically the ones doing worse in classes. If we were ranking confidence, I'd definitely put Sean at very first place. So what is the definition we're going with is the biggest question. I like your definition. I know, I was gonna say, I like my definition. It combines everything. Does anyone have any like... No, it does not combine everything, but what creative intelligence, what spatial intelligence. There are तुम्हारे 9 to 7 types of intelligence होते हैं.
You can be honest. Start on that side. I'm done going first. I feel like I have a good combination of both, like book smart and street smart. So yeah. What does that mean? Book smart, high IQ basically, right? And street smart. What do people mean by that? Like आपकी लाइफ में स्ट्रीट्स में इतना एक्सपोजर हो गया तो आप को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता. आपके अंदर ये दिमाग है कि आप इतने पैटर्न से वाकिफ़ हो सके हो या हो चुके हो, इतने सारे पैटर्न से वाकिफ़ जहाँ पे लोग जो स्ट्रीट पे नॉर्मली एक लेवल पे चीज़ें आपको बेच रहे हैं, आपको वो रिवील पता है ऑलरेडी. आई थिंक स्ट्रीट स्मार्ट यही मेरे ख्याल से लोग समझते हैं उसको, कि आपको कोई चूतिया नहीं बना सकता, क्योंकि भैया हम सारे स्कैम समझ चुके हैं, हम सारे स्कैम जान चुके हैं, हम नहीं बनेंगे उल्लू. Have some input on that. There's so many aspects to intelligence. It really goes beyond IQ and EQ. Even those two different factors really don't really capture what it really means to be intelligent. I know I'm not, from Yale. I don't have a PhD, but what I lack in those areas, I'm able to still problem solve and use my own skill set, my emotional intelligence as well as my social intelligence. Besides my education, I think emotional intelligence directly impacts your social intelligence, because अगर emotional intelligence जिसको नहीं पता basically है the ability to understand, regulate and spot your own emotions. यानी कि आप कितने सारे अपने emotions को अपने अंदर recognize कर पाते हो, क्या चल रहे हैं, फिर आप उनको regulate कर पाते हो, जो कि self control हो गया, और adjust कर पाते हो, which is in itself dangerous level पे intelligence के अंदर ही ability कोई कर पाए. And I think अगर आप अपने अंदर कर सकते हो तो आपकी social skills already बढ़िया हो जाएंगे, because आप दूसरों के emotional predispositions को समझ पाओगे, उस हिसाब से react कर पाओगे, और you'll be more tolerant, you'd be more careful, you'd be more sensitive, you'd be more रूम में तुम बहुत जल्दी रिएक्टिव नहीं हो जाओगे. जैसे तुम्हारा न्यूरोटिसिज्म अगर बहुत बड़ा हुआ है कि तुम हर चीज़ को नेगेटिवली परसीव कर रहे हो, हर एक चीज़ का कोई भी इंसान ने हल्के से भी कुछ रिएक्ट कर दिया, लाइक हाँ. एंड आई थिंक एक इंसान जो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस में वर्क कर सकता है बहुत ज़्यादा, और इमोशंस को कंप्लीटली दूसरे नए नए पर्सपेक्टिव से देख के रीएडजस्ट कर सकता है, वो सेम चीज़ दूसरों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या इंटरपर्सनल कॉन्वर्सेशंस या फिर सोशल कॉन्वर्सेशंस में भी ला सकता है. and background, I feel like I have high emotional intelligence, like I'm Oh my fucking god. aware of my surroundings. As a software developer, my problem solving skills are obviously top notch, I think I would say. Wait a second. My whole life I've kind of had to fight to be seen as intelligent. I think I'm so मुझे एक बार फिर से सुनना, लड़की ने क्या बोला? As a software Background, I feel like I have high emotional intelligence, like I'm aware of my surroundings. as a software That's not what developer, emotional intelligence is. If you're aware of your surroundings, that's not emotional intelligence. my problem solving skills are obviously top notch, I think I would say. My whole life I've kind of had to fight to be seen as intelligent. I think I'm so used to having to do that as a woman, to just step up and be like, I deserve to be here. My first job out of Assertiveness. And वो जो कह रही है to a great degree is actually true. इस पर बहुत सारी तुम्हारी सोशल साइंसेज में रिसर्चेस हो चुके हैं, सोशियोलॉजी में भी हैं और सोशल साइकोलॉजी में भी हैं, जहाँ पे तुम्हारा मेन को, या फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा एक जनरल सेंस में, अगेन जनरलाइज वे में देखो कि हम मेन जो कि थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं, या फिर मेन जो कि नेसेसरली वेल केप्ट हैं, हम उनको रखते हैं कि हाँ ये बेटर कर सकता है, और ये बहुत ही अनकॉन्शियस बायस होता है. मैं नहीं कह रहा सबके अंदर होता है, मैं कह रहा हूँ जनरल काफ़ी लोग में आपको मिलेगा ये बायस होगी. और हम लड़कियों पे ज़्यादा टेस्ट करना, हम ज़्यादा रिलाई करते हैं कि ये पहले प्रूव करे, फिर हम कहेंगे हाँ ये वर्दी है. लेकिन हम वो सेम लेवल का जो भी टेस्ट है, स्क्रूटनी है, मे बी मर्दों पे अनकॉन्शियसली, ये बहुत ही छुपे हुए बायसेस होते हैं ह्यूमन ब्रेन में, जो कि आई थिंक प्रथाओं या किसी तरह की जो हम जैसे बड़े हुए हैं वहाँ से हम सीख गए हैं. सो आई अंडरस्टैंड. सेकेंड चीज़ ये भी होती है कि लड़कियों में इन जनरल अगेन सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है, वेराज लड़कों में असर्टिवनेस ज़्यादा होती है. अगेन ये हर एक की बात नहीं होती, लड़कियाँ भी बहुत सारी हो सकती हैं जो बहुत असर्टिव हों, और लड़के भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत सेल्फ डाउटिंग हो. But in general मैं बात कर रहा हूँ. college, I was working at a law firm. Gentleman came up to me and said, "Hi, you don't look like somebody that would work at a law firm. You look like somebody I'd go on spring break with." And I'm like, what? I'm like, Obviously, out of everyone here, I've got the least formal education. I consider myself intelligent. My mental dedication and my ability to adapt and to Social adaptability, mental dedication हो गया तुम्हारा, क्या नाम है,
conscientiousness. Problem solve. What I do in the Marine Corps, I'm a seabird defense specialist. So I think that by virtue of what I do, that already requires some amount of intelligence. Sorry, quick question. So do you think that only certain people can do your job, or do I think so. you think anyone can do your job? Only certain people. You have to take the ASVAB before you go into the military. That's not really how much you know, but how well you can learn information. And I got a 94 on that. It's not an amount of how much you study, how much you know. You're not going to really get better at learning. Does that make sense? I strongly disagree with you don't get better at learning. The idea that you can get better at learning is a pretty big signifier of intelligence. I'm very much dyslexic. I have ADHD and I'm on the autism spectrum. Dyslexia means that there's a big gap in comprehension. So I was scoring 99th percentile in certain areas and like 3rd percentile in others. I'll never be able to learn another language. I took Spanish for 12 years and I can still basically only order a burrito. So I have a question. Why did you go to Yale and why did you go to Harvard? My parents are immigrants from China, and I'm a first generation immigrant as माता पिता ने चप्पलें चलाई सर पे, basically Asian culture. well, and college student as well. My family always really stressed the importance of formal education. For me, that was something that I really strived for. I wasn't planning to go to college. That wasn't like a goal of mine. My parents were like, well, you should apply to at least one college. And I was like, I'll never get in here. And then I went to Yale. That was kind of like a Why don't you guys rank each other from 1 to 6, including yourself, and give reasons why you want to do what you're doing? I gotta go 1. No. Oh yeah. 2, 3, 4, 5, 6. I would rank you as a 6, not meaning that you're not intelligent. I also think that I don't place a lot of value on the military. So तुम्हारा military को लेके अगर कोई bias है, that has nothing to do with intelligence. जो conversation हो रही है, which actually shows outside of ADHD and you know तुम्हारा dyslexia and कौन सा autism spectrum, like your problem solving और perceiving में ही बहुत बड़ा लोचा है क्योंकि तुम अपने बायसेस से सोच रहे हो, which basically shows चाहे आप दुनिया में कुछ भी उखाड़ लें, चाहे कुछ भी बन जाए, कहीं भी जाके पढ़ लें, चाहे ये लोग हो चाहे कुछ भी हो, इंसान बेसिकली घोंचू ही रहता है. ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात डैनियल कानमन ने रही है जो कि जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है you know, इन सब डिस्कवरीज के लिए, और उसका खुद ही पॉइंट यही था कि ये सब डिस्कवरी इवन तो मैं कर भी रहा हूँ, ये चीज़ें मैं लिख भी रहा हूँ, लेकिन मैं भी उतना ही घोंचू हूँ जितनी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ. लोग जो घोंचू होते हैं और जो भी लिख रहा है बोरिंग है समथिंग, प्लीज यार छोड़ के चले जाओ यार, मत देखो. Period. No, that, yeah, full stop. I'd probably do 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm sorry. I'm the villain this episode. Wow. Does anyone think they're like at either end of the spectrum? I'd say I'm 1, if nothing else, because I know what I'm about and I'm sure of that. But see, he ranks very high in assertiveness. That has no indication कि तुम actual में 1 हो. But this is all you know, evidence for very, like, it's a thin line between overconfidence and being very sure of yourself. Wait, you guys have to rank everyone too. That is so unfair. No. I would say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. I think 1, 2. Oh, she plays तुम्हारा, she chose the Asian guy, the quiet Asian guy key. Yeah. And what are they rating तुम्हारा, the creative art director? Social 3, media director. 4, 5, 6. 5, okay. Sorry. It's hard for me to look past the education part. Going to college, I think you learn a lot, if nothing else emotionally, but I still think you're smart. Oh, thank you. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is very interesting human behavior के point of view से कि जो इंसान सबसे कम बोल रहा है उसको they are rating 1. यानी कि हम कैसे साइलेंस को इंटरप्रेट करते हैं अपने दिमाग में. जो इंसान कम बोल रहा है हम उसको इंटरप्रेट करते हैं मे बी क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत कम है, और लिखित में जो डेटा उनके पास है, सीवी में इंसान हार्वर्ड गया हुआ है तो हम ऑटोमेटिकली रैंक कर दे रहे हैं, जो कि पेपर वाला एविडेंस हो गया. बट जो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है जिस चीज़ पे, उससे उनके पास डेटा घंटा नहीं है, क्योंकि आपस में तो एक दूसरे से बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं लोग, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज आंसर्स ये अपने आप को कम रेट कर रहे हैं. यानी कि इंसान जिसने सबसे ज़्यादा आंसर दिया उसको कह रहे हैं ये लीस्ट इंटेलिजेंस है. Grandparents,
first generation going to college, humble, modest. Two, See, humble, modest, because actual में humble, modest ही terms हैं, वरना बाकी terms को interpret किया जाएगा negatively अगर वो कहे कि you're quiet, shy. me, I don't know, PhD, cancer Yeah. biology scientist. I work in a biotech company. We make COVID-19 testing kits, stuff like that. Jesus fucking Christ. And then 6. It has nothing to do with your background. I don't think you really have the highest EQ out of all of us. EQ? EQ? Tyler, he ranked last for me personally because the way he carries himself. He was ranking. So she's just basically offended, या फिर तुम्हारा he rubbed her the wrong way with his assertiveness, क्योंकि वो confident है बहुत ज़्यादा, and she's like ये again वही हो गया. हम see the fucking hypocrisy and dangerous demonstration of human behavior यहाँ पे. एक इंसान जो खुद को proclaim कर रहा है कि मेरा EQ बहुत high है, इमोशनल इंटेलिजेंस मेरा बहुत हाई है, वो कह रही है कि मैं इस इंसान को कम रेट करूंगी क्योंकि इमोशनली मुझे पसंद नहीं आया. जिस भी इंसान का इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअल में हायर होगा, EQ जो वर्ड फेंक रहे हैं वो जानता है कि इतने से इंफॉर्मेशन या एक्सचेंज में अभी हमें घंटा कुछ नहीं पता चल रहा. हमें ऑब्जेक्टिवली डेटा कलेक्ट करना है, सब्जेक्टिवली करना नहीं है, आर्बिट्ररीली नहीं करना और इमोशनली नहीं करना. और इंसान चाहे कितनी बकवास कर ले, ये होता है GI जो फैलेसी. हम अपने दिमाग में चाहे कितना भी बोल रहे हैं कि हमें पता है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं सब समझ चुका हूं, मैंने सारी थ्योरीज रट ली हैं, मैंने सारी फिलोसफी पढ़ ली, मैंने सारी साइकोलॉजी पढ़ ली, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है. लेकिन आपका दिमाग रियल टाइम में कैसे वर्क करता है, आप एक्चुअली अप्लाई घंटा कुछ नहीं कर रहे हो. Intelligence based on his point of view and not taking in other people's point of views and compiling results, but really just came down to his body language, his demeanor, the way he carried himself. All of these things are not signs of intelligence. अगर तुम इन बेसिस पे कर रहे हो, body demeanor, body language, all of this is all horseshit, by the way. Plain, simple horseshit. The way he acted towards the group. I would put. So, intelligence is again बहुत dangerous चीज होती है. People who could be highly narcissistic as well as assholes and jerks and fucking crazy can actually be highly intelligent as well. They can have very high IQ. तो अगर तुम इंटेलिजेंस जज कर रहे हो और कैरेक्टर नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे जो लड़की मिफ्ड हुई है ये उसका कैरेक्टर को ज्यादा जज कर रही है. मुझे इसका कैरेक्टर पसंद नहीं आया, मुझे इंसान पसंद नहीं आया. और यहाँ पे जो टेस्ट है जो आपको अपने ओपिनियन देना है वो है बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस. एंड यू कैन नॉट कीप योर इमोशंस, अगर कि असाइड फ्रॉम डिटरमिनिंग यहाँ पे कि भैया इंटेलिजेंट इंसान कौन है, दैट जस्ट शोज कि तुम्हारा इंटेलिजेंस कितना है. 1, 2, 3, 4, 5, and out 6. So this motherfucker is actually this. अब मैं बताऊं अगर जहां तक वो था, this assessment, he put himself the least intelligent. That is actually the sign of a very high intelligent person. Because self-awareness. The ability कि आप अगर किसी भी ग्रुप में हो और उसमें assimilate करने के लिए आप अपने आप को अंडरडॉग बनाने को तैयार हो ताकि आप सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों की नजर में ना आओ, इज एक्चुअली एन इंटेलिजेंट मूव. आप एक सेकंड में सारी टेंशन डिफ्यूज कर देते हो पांचों के पांचों लोगों से ये कह के कि आप सब तो मुझसे बहुत बड़े हैं. एंड आप फिर खुल के बात कर पाते हो, कोई भी आप पे अटैक मोड पे नहीं आएगा, कोई भी आपको थ्रेट की तरह नहीं देखेगा. एवोल्यूशनरली प्रो मूव. The reason why I put you at number 1 is I think you have the highest not only EQ score out of everybody, but the way you present yourself, as well as being a PhD student, I think is just like a huge thing. And I put myself 6 because I feel like I might be the degree के point of view से I think he puts himself the least educated. weakest in terms of actual IQ score. See? Hopefully I can make it up as everything else. No, bro, you're fine. See, that's the thing. You're fine. You're fine. So इंटेलिजेंस IQ ही नहीं होता, बहुत तरह का इंटेलिजेंस होता है. So you don't have to worry. बहुत सारे लोगों का बहुत IQ हाई होता है एंड श्योर उस IQ रिलेटेड टास्क में वो फोड़ के हाथ में रखते हैं, बट यू नो देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स इन लाइफ. यू नो बहुत सारे क्रिएटिव लोग होते हैं जो कि भयंकर लेवल पे क्रिएटिव हैं, बट उनका IQ घंटा वो यू नो उस लेवल पे नहीं है. I did put myself as least intelligent. However, if it can't be me, I definitely think Tyler, unfortunately, his way of thinking is linear.
And I think intelligence is almost like a sphere. It's a picture. It And is. right now he's only coloring with one color than, you know, with the rainbow. Very good point. Who got the most number ones? Asian guy. Who's down? Who got the most? Sean A was like pretty you. up there too. I feel like you were definitely 3, right? Yeah, I'm between You were Harvard and 4. Yale. एंड लॉन्डा ने जो पॉइंट भी दिया ना, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट दिया कि ये लिनियर वे में सोच रहा है, बिकॉज जो लड़का ये जो मिलिट्री वाला है वो जो गलती कर रहा है वो ये है बेसिकली, वो हर चीज़ को सिर्फ आईक्यू को इंटेलिजेंस में इंटरप्रेट कर रहा है. ही इज नॉट कंसिडरिंग ऑल द अदर थिंग्स. I think that I sort of expected to be ranked a little bit lower. At first glance and first interaction with me, it's hard to tell how intelligent I am. It's hard to tell how intelligent anybody is. Is anyone upset with where they're standing? I think it makes sense that I'm down here. Like the guy who graduated from high school and then joined the military, he probably wouldn't be like high up on there. If I was in there, He also has a chip on his shoulder. He's kind of like, you know, very sensitive about कि मैं high school ही हूँ. Also ranked myself among the lowest. I do feel like there might be a prejudice acting in terms of ranking you Okay, I was thinking that. Because he's Asian. highly. But I agree with the ranking. I think you probably are the most intelligent out of all of us. I would feel weird placing you there and not I think the word acknowledging they should have been using is smart. The smartest. the dynamics in which we did so. Why a new IQ test? Why? Oh, which means they're taking for the first time. I thought like the second time later. Hearing that to take an IQ test was definitely hard to hear. Quantifying things for me in that realm is really hard because it gives you something really solid. Even if you don't buy into IQ tests, it still gives you a number at the end of the day, which is something you have to कह रहे हो grapple उसको with. लौंडा मत को cancel हो जाएगा. I literally thought when you said to open the computer, we're going to look at social media, that I didn't think an IQ test would be part of it. It was kind of expected. We're being ranked by intelligence, you know, an IQ test. It's not that far out the realm of possibility. So number 1 is Raymond. Number 2 would be Kaylee. Number 3 will be So the Asian guy was right, the highest IQ maybe. Tyler. And number 4 would be Shada. Number 5 is Sean and number 6 is Maria. But 112 is average. 136 IQ है लौंडे की, बाप रे. 136, 133, 131, 131, 131 एंड भाई साहब जो अपने आप को सबसे स्मार्ट कह रही थी, ओए 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 ओए, इसमें तुम्हारा वो भी बन गया मीम, कर्ब योर परसीव्ड इंटेलिजेंस. बट तुम अगर इनकी पर्सनालिटीज देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. द स्मार्टेस्ट पर्सन, बिकॉज वो एक कलेक्टिविस्ट कल्चर से आ रहा है जो कि है चाइना और इंडिया. इन सब में बहुत सारी सोशल साइकोलॉजी में रिसर्चेज हुई हैं. हमारा कल्चर है जो कि अपने आप में हमेशा हम काइंड ऑफ डाउट करते हैं कि अगर हम एक ग्रुप में हो, और इवन हम अगर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में यू नो काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर हमारा एडमिशन हो गया, हम काइंड ऑफ ऐसे देखते हैं रियलिटी को कि यार लेकिन मैं यू नो पता नहीं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ. हम हमेशा डाउट करते रहते हैं. कलेक्टिविस्ट कल्चर का पार्ट होता है कि तो वो देख लो कभी ब्रैग नहीं कर रहा है, तुम इसमें उसका कल्चर का यू नो लाइक यू कैन सी द ट्रेड्स ऑफ इट या हिंट्स ऑफ इट, एंड ही इज क्वाइट एंड ही इज, यू डोंट इवन हियर हार्वर्ड आउट ऑफ हिज माउथ, ठीक है, एंड ही इज द स्मार्टेस्ट. एंड प्रॉब्ली द वे तुम्हारे जिस तरह से वो बात करता है उसमें दिख भी रहा है कि ही स्टिल डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ लाइक कि मैं सबसे स्मार्ट इंसान हूँ. देन ऑब्वियसली तुम्हारा सेकंड पर्सन ब्लॉन्ड लड़की जो कि यू नो स्टीरियोटाइप्ड है अपनी लाइफ में, वो खुद ही करी, लोग आके उसको हमेशा रॉन्गली जज करते रहते हैं, तो उसको लगता है मुझे अपने आप को प्रूव करना है. इवन उसका IQ हाई है, यू नो फोड़ भी रखा उसने अपनी लाइफ में. तीसरा लौंडा जिसका चिप ऑफ द शोल्डर कहाँ पे है तुम्हारा, उसने हाई स्कूल पास है, लेकिन उसका अचीवमेंट क्या है, मिलिट्री में जाके उसने वो चीज़ में उसने पार्टिसिपेट किया जिस चीज़ में सेलेक्टिवली लोगों को लिया जाता है, मेमोरी रिटेंशन में जो हाई रैंक करते हैं उसमें. तो क्लियरली IQ आता है इसके अंदर, मेमोराइजेशन में हाई है. फिर चौथी लड़की ऑब्वियसली येल में सिलेक्शन हुआ है उसका, तो बेवकूफ़ तो होगी नहीं. पांचवा क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंसान है वो. IQ टेस्ट से आप इंटेलिजेंस डिजाइन कर रहे हो तो आपको ये भी लिखना चाहिए, आप जनरल इंटेलिजेंस की बात करो, GI. IQ इट्स नॉट इंटेलिजेंस. IQ वर्सेस रैंक द इंटेलिजेंस, IQ वर्सेस फर्स्ट इंप्रेशन. सो या, सो दे एक्चुअली हैव रिटन इट. सो यहाँ पे IQ की बात चल रही है, एंड दैट आई डोंट थिंक दैट पर्सन एवर बोस्टेड. द फनीएस्ट थिंग इज दिस द गर्ल हु वाज लाइक, मैं अपने आप को नंबर 1 रखूंगी या नंबर 2 रखूंगी, एंड यू नो दिस एंड दैट, एंड सबको बता रही है मेरा IQ एंड EQ एंड ऑल ऑफ दिस. माय लॉर्ड, आई होप शी गेट्स टू स्पीक फॉर द लास्ट टाइम.
I think an IQ test tests something. I don't think it's intelligence. It's definitely testing something. It's a type of intelligence. IQ tests are now known to be flawed and like based on incorrect sample sizes. I have really severe dyslexia. There's 2 questions on that test that I automatically basically can't I understand from her point of view. answer. I get that. I'm sure if you studied for an IQ test, you would do a lot better. IQ tests are just one aspect or one way to measure intelligence. Yeah. It's really on a spectrum what constitutes somebody as intelligent. Before this, all I knew about IQ tests is that they existed, and the I stands for intelligence. I've never looked into IQ tests before. Coming here today, them saying the EQ, that was the first time I've ever heard that term in my life. Coming back to intelligence, it's not just your IQ, it's your EQ, it's your common sense, it's street smarts. Sure. Common sense, I think, to a great degree, would rely on IQ के अंदर जो फ्लूइड इंटेलिजेंस आता है, IQ के अंदर 2 इंटेलिजेंस आते हैं बेसिकली, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जिसके अंदर मेमोराइजेशन, मेमोरी रिटेंशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, फिर आता है फ्लूइड इंटेलिजेंस जिसके अंदर आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कॉमन सेंस जिसको हम कहेंगे वो भी. Or it is some type of metric similar to an it's a very complex तुम्हारी दुनिया basically. SAT and ACT score is a metric for getting into college, but there's more to that person than that test. I'm actually excited I wasn't last because I thought I was gonna be last, not gonna lie. I think an IQ test is a good indicator to see how people handle pressure, but I think that's easier to make sense in our heads that, oh, you're smart and you're not smart. Definitely don't think it's the best metric. It is I've not. been exposed to tests like these probably more than most people here. That already gives me an unfair advantage. This is my villain redemption arc and climbing up the ladder. Also, she's very right. You know, like with a person with ADHD, it's also very hard to focus on a test for very long. It's really very like, अगर repetitive questions आ रहे हैं, it's like your attention is going to 30 different directions. But anyhow, ये वीडियो अपना खत्म हो गया.